Good morning, everyone. Welcome to the last morning session for the week. Good morning. I hope you all can hear me and see me. Please write yes if you can hear me and see me. Great. Thank you for the confirmation. Even Dave sir has joined in. Let me just add him to the stage. Dave sir, please accept the request to join in the stage. Dave sir, can you hear me? Please join the stage. I hope I'm audible, sir. Yes, give me a minute and we'll begin. Sure. So कल हमने आफ्टरनून में कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था. We did share BTST and CDI call, but we did not initiate any trade with Madhur sir. Today we have census expiry and our morning session. We hope कि we book profits in these two sessions, sir. And everyone who has joined in, thanks a lot for your patience and supporting us throughout this journey. We are almost reaching 1.5 lakh members. Hope you share with more people and more people join in and get to know more about Stockholm and the community which we are trying to build here. Good morning. Intraday cash and trade stop loss. We will definitely share intraday trades. Just give us a minute. We are just setting up. So I guess let's start with the introduction. Good morning, everyone. My name is Anuj Sharma. I am your community manager working at Motilal Oswal. Every day you see me hosting these sessions with different experts. Today we have Mr. Dev Parekh with us, hoping he gives a good analysis for stock intraday and we book some profit on a Friday, and that helps us, create a momentum for our afternoon session. Today we have census expiry at 2:30 p.m. Afternoon sessions में हमारा focus ज़्यादातर derivatives basically हमारी expiry पे होता है. We try to take queries in the afternoon session, but sometimes we can't. Just like yesterday, we took for like 5 minutes, but throughout the session we did not take any queries. So for the morning session, feel free to drop your queries. Just don't write stock name. Please write कितनी quantity पे आपने खरीदा, कितने price पे आपने खरीदा, या आप कितने price पे खरीदने का सोच रहे हैं, along with the duration. 6 months, 11 months, 10 months, 12 months, 2 years. क्योंकि मेरा short term और आपका short term में difference हो सकता है. So without wasting much time, Dev sir, over to you. Please start with the market outlook and probably a profitable intraday trade. Yes. So good morning, everyone. I am Dev Parekh, and let's begin this session with the levels first. Then we'll move forward to the watch list and then to the queries. So talking about the levels, Nifty hurdle at Nifty resistance at 24,750, then at 24,850, support at 24,450, then at 24,350. Talking about Bank Nifty, it will be resistance at 5,500 and support at 5,750, then at 5,500. Oh, I'm sorry. The Bank Nifty resistance will be 51,500. A small correction. Bank Nifty resistance at 51,500. Support will be 5,750 and 5,500. 50500. Talking about today's expiry, that is Sensex, and the upside resistance will be 8,750. Support at 8,250. And then at 80,000. Talking about the market, तो ऐसा है कि निफ्टी में हमें डिक्लाइन नजर आ रहा है 0.40% का, which was almost 0.5% के ऊपर था थोड़े समय पहले तो सेशन शुरू होने के. But अभी small recovery which is negligible, but निफ्टी थोड़ा सा weak उसी जगह
पर बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग, एक्सिस बैंक ड्रैगिंग बैंक निफ्टी इन दी पॉजिटिव साइड. मॉर्निंग में मैं जब इंडेक्स देख रहा था बैंक निफ्टी का, उसमें आई सॉ कि ओनली आई गेस एक्सिस बैंक जो था वो ग्रीन में था, बाकी सारे तो फ्लैटिश या तो फिर नेगेटिव साइड पे थे. सो एक्सिस बैंक फॉर नाउ वी कैन कीप इट इन आवर वॉच लिस्ट. It can be Axis Bank as well as we can keep Tejas Net in our watch list. So Tejas Net और Axis Bank रहेगा हमारा watch list में. There is Tejas Networks. And दो stock watch list में बता दिए, थोड़े बहुत levels बता दिए. So we can move on to the queries until we finalize our intraday pick for the day. Sure, sir. So the first query is NHPC bought at 106, quantity 200 for 2 months. Bought at 106, 200, target for 2 months. देखिए करंटली एडेड सपोर्ट यहाँ से थोड़ा वीक नजर आ रहा है चार्ट. 2 मंथ्स में मे बी अगर मैं आपको कहूँ 2 मंथ जितना तो व्यू नहीं नजर आ रहा है. इमीडिएटली इन स्विंग मैं कहूंगा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है. नीचे की साइड पे 75 पे सपोर्ट है व्हिच इज अ लॉन्ग वे. सो 75 सपोर्ट, रेजिस्टेंस एट 100. Sir, Vion Motherson bought 1000 shares at 210. 110, राइट. सो आप ऑलरेडी 1000 shares. अच्छा सॉरी 210. ठीक है. संवर्धन में सॉरी मदरसन में इतना डरने की बात नहीं है. चार्ट पे पॉजिटिव लग रहा है. एक छोटा सा रेंज है 220 से लेके आप नीचे की साइड पे 185 पकड़िए. 220 भी नहीं, 215 से 185 पकड़िए. यहाँ पे अगर कोई रेंज ब्रेक नजर आता है तो आपको अकॉर्डिंगली मोमेंटम नजर आएगा. बट मैं कहूंगा आने वाले टाइम में आपको इसको 220 अगर क्रॉस करता है आपको टुवर्ड्स 240 टू 250 का एक रैली नजर आ सकता है. नीचे की साइड पे सपोर्ट विल बी 185. Sir, ePack Durables bought at 418, 10 quantity. Can you spell it for me? EPACK. Durables, yeah. Bought at 418, 10 quantity. ठीक है. इसमें आपको 418 एग्जिट तो मिल जाएगा, बट मैं कहूंगा एग्जिट के बाद थोड़ा सा होल्ड कीजिए क्योंकि वॉल्यूम्स इतने नजर नहीं आ रहे. अभी रिसेंटली थोड़े वॉल्यूम्स आए हैं, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए. तो आप अपने बाइंग प्राइस पे एग्जिट करिए, वो बेटर रहेगा. Sir, view on Nestle. वीकनेस है काफी. नीचे की साइड पे 200 तक का वीकनेस नजर आ सकता है इसमें. सो की लेवल्स याद रखिए. 200 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एट 2500, 2500. So CDSL 1600 for 3 months. 3 मंथ्स के लिए कोई दिक्कत नहीं. मैं आपको कह रहा हूँ टुवर्ड्स 2000 की रैली आपको मिल सकती है इसमें. एंड नीचे की साइड पे की सपोर्ट एट 1350. Yesterday's crude oil prediction was great. Thanks for the feedback, Prakashji. Apparently, I did not join in because I had some other commitments. But I hope you made good profits in that. Sir, I invested in BSE Limited, total 66,793 rupees. That is 14 shares, averaging at 4770. But now BSE Limited is down by 11%. So what can I do? So what was the buying rate again? He has not mentioned the buying rate. His total investment is 66,700 and the average is 4770. हाँ 4770 का एवरेज है. मतलब he has bought around 4770 ना. Yeah. ऑलमोस्ट हाईएस्ट पे बाई किया है सर ने. ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली.
बट यस, मैं आपको कह सकता हूँ अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाह रहे हो, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप चाहोगे, टाइम फ्रेम मेंशन किया है क्या बाय एनी चांस? नहीं। नहीं, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग आप लॉन्ग टर्म अगर होल्ड कर सकते हो, इफ योर रिस्क एपेटाइट अलाउज यू टू, आप होल्ड कीजिए। आने वाले समय में बीएसई, सीडीएसएल, ये सारे स्टॉक्स हम पॉजिटिव है, स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड, तो मैं आपको कहूंगा कि आप होल्ड करिए, वो बेटर रहेगा। एंड आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप स्विंग के लिए देख रहे हो तो आपका करंट सपोर्ट will be around at 4,000 and resistance will be around 4,700. Sir, Yes. Pradeep Phosphate bought at 88, 250 quantity, target for 2 months. Which one? Pradeep Phosphate. Target for 2 months. काफी अच्छा है सेटअप, मैं आपको कहूंगा 100 प्लस के एक्सपेक्टेशंस रखिए। अच्छा रैली बना रहा है एंड रेंज ब्रेकआउट मिल सकता है एट अराउंड 96 97। अगर रेंज ब्रेकआउट मिलता है आपको 105 100 के तक मिल सकता है इसको। Sir, Bajaj Auto 11900 buying 20 shares. जस्ट टू क्लैरिफाई टू आवर यूजर्स, हम यहाँ पे दो चार्ट यूज करते हैं, एक जो आपको दिख रहा है वो, और एक और जो हमारे सिस्टम में चल रहा है वो। सो इट इज समटाइम्स, मैंने एक क्वेरी देखा था, जब मैं क्वेरी हम खुद से लेते थे, इफ यू रिमेंबर अनुज, तो वो टाइम पे मैंने एक क्वेरी देखा था, वो कह रहे थे आपको ये चार्ट में ये रेंज नजर ही कहाँ आ रहा है। तो हमारे पास दो चार्ट है यहाँ पे, एक जो आप देख रहे हो और एक जो मैं देख रहा हूँ वो मेरे दूसरे सिस्टम में। सो अगर किसी को वो क्वेरी आ रहा हो कि अरे ये चार्ट में देख के ये रेंज कैसे निकाल रहा है, तो वी हैव टू डिफरेंट चार्ट्स। So moving forward to Bajaj Auto, is there any buying price time frame? 20 shares bought at 11900, 11,900. देखिए बजाज ऑटो में ऐसा हुआ कि कल इफ यू रिमेम्बर 10% का लोअर सर्किट लगा था उसमें, एंड उसके बाद भी आज डिक्लाइनिंग में है, अराउंड 2% नीचे है। तो उसका एक ही इम्पैक्ट है, इट वाज अ न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट, जहाँ पे वो फेस्टिवल सीजन की सेल्स के बारे में एक नेगेटिव कमेंट आया था उनके मैनेजमेंट से। सो मैं आपको कहूंगा अभी के लिए आप होल्ड कीजिए, वो अपने की सपोर्ट पे है, 9,500 9,600 का उसका सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। तो उतना अगर आप होल्ड कर सको तो इफ योर रिस्क एपेटाइट अलाउज यू टू, मैं कहूंगा 9,600 700 तक होल्ड करिए, या तो 9,600 700 पे आप एवरेज कर सकते हो। एवरेजिंग यूजुअली हम रेकमेंड नहीं करते, बट इतना पैनिक सेलिंग आया है तो देयर यू कैन डू इट इफ योर रिस्क एपेटाइट अलाउज यू टू। आपका रिस्क बढ़ जाता है व्हेन यू एवरेज, तो वो भी ध्यान में रखिएगा प्लीज। Sir, RBNL bought 180 quantity at 608. Hold or sell? Bought at? Bought at 608. मैं कहूंगा अभी के लिए हाफ क्वांटिटीज आप लॉस बुक करिए, एंड हाफ में यू कीप यू नो बीइंग इन द स्टॉक, और दूसरा जो हाफ आप सेल करोगे वो आप फिलहाल के लिए कोई और स्टॉक्स में लगाइए जिसमें मोमेंटम नजर आ रहा है। रेलवे का ऐसा है ना कि रेलवे इतना चल गया था एक टाइम पर, अराउंड 2 to 3 months बैक या उससे भी थोड़ा पहले, कि अभी एक सैचुरेशन पॉइंट है फॉर अ टेम्पररी बेसिस, मतलब ये सैचुरेशन परमानेंट नहीं है, फिर से वो रैली नजर आएगा हमें, बट इन सम टाइम एक आधा महीना या फिर लग सकता है वो रैली देखने को, एटलीस्ट 2 weeks लग सकते हैं। तो मैं आपको कहूंगा हाफ क्वांटिटी बुक करिए, और हाफ में आप यू कीप ऑन स्टैंडिंग, और दूसरा हाफ आप इन्वेस्ट करिए जो स्टॉक्स में मोमेंटम नजर आ रहा है अभी। Sir, Yes Bank for 3 months holding bought at 17 rupees. Just a second. So before we move forward to Yes Bank, Anuj, जो हमारे यूजर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, they might be knowing, मेरे 2 सेशन पहले मैंने ये सेम स्टॉक दिया था फॉर इंट्राडे, आज फिर से इनिशिएट करना चाहूंगा MCX। सो MCX पे बाइंग करेंगे हम, करंट मार्केट रेट है 6438,
6438. So the target will be 6535.5. And stop loss will be 6373.5. Noted? Yes. सो वील मूव फॉरवर्ड. एक और स्टॉक मैं सोच रहा हूँ देने का, बस उसका रेंज ट्रैक कर रहा हूँ. ओ एक्चुअली फॉर आवर यूजर्स मैंने आपको तेजस नेटवर्क वॉच लिस्ट में ऐड करने बोला था. जब से बोला है वहां से अराउंड 3% अपसाइड पर. So I guess within 10 minutes 3% ऊपर आ चुका है स्टॉक, which is incredible. But हमने मिस कर दिया 4%. अब एक और परसेंट ऊपर आ गया लास्ट 10 सेकेंड में तेजस नेटवर्क. तो उसमें ही मैं देने वाला था, बट यस वी मिस द अपॉर्चुनिटी. आगे बढ़ते थोड़ा क्वेरीज के ऊपर. सर कैन आई बाय आजाद इंजीनियरिंग नाउ? लेट मी चेक. इंट्राडे बात करो तो यस, और स्विंग की बात करो तो भी यस. ऊपर की साइड पे स्विंग में 1600 का रेजिस्टेंस, नीचे की साइड पे 1400 का सपोर्ट. Sir, PC Jewelers bought at 182 for 100 shares. Hold or sell? Bought at 182. ठीक है, दिक्कत नहीं है, आप होल्ड करिए. बहुत अच्छा सेटअप है. 200 तक का रेंज नजर आ रहा है. 200 के ऊपर जाता है तो आपको फ्रेशर लेवल्स मिल सकते हैं 210 220. Sir, next we have is तेजस नेटवर्क्स और 1% ऊपर, टोटल 7.5% ऊपर. Sir, Wellspin Living bought at 156. View for short term or swing? देखिए शॉर्ट टर्म में अगर इंट्राडे बात कर रहे हो अच्छा लग रहा है. 167 तक का लेवल नजर आ रहा है आज. एंड अगर स्विंग की बात करें तो ऊपर की साइड पे 175 और नीचे की साइड पे 155, which is almost 1:1 रेशियो. 10 रुपया नीचे ऊपर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस. Sir, M&M Finance bought at 330.60 on 23 September. 250 quantity through MTF. एट रेट 330.60. देखिए 330 है प्लस आपने एमटीएफ में बाय कर रखा है, तो एमटीएफ पे आई अज्यूम आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो अपने ब्रोकर को. सो 330 पे आप 285 पे होल्ड कर रहे हो, तो आपका लॉस कहीं ना कहीं जो दिख रहा है उससे तो ज्यादा ही है. तो मैं आपको कहूंगा अभी के लिए स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं एंड दूसरे कोई स्विंग प्ले में एंटर कर सकते हैं. या तो फिर मैं आपको कहूंगा हाफ क्वांटिटीज अभी एग्जिट करिए, हाफ में आप होल्ड रखिए और दूसरा हाफ आप इन्वेस्ट करिए कोई और स्टॉक. सर आई गेस हमारी यस बैंक की क्वेरी रह गई थी. आई एम सॉरी. Yes Bank bought for 3 months at 17 rupees. 17 rupees, right? Yes. देखिए मैं आपको कहूंगा यस बैंक आप एक काम करिए, 17 रुपीज का बाइंग है, 19.5 पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करिए. वो आपके लिए सही होगा क्योंकि ऑलरेडी अच्छा चल रहा है. सेटअप थोड़ा सा वीक है बट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मिल जाएगा. स्विंग प्ले में थोड़ा वीक, और 17.5 का ही रेजिस्टेंस नजर आ रहा है. सॉरी 19.5 का ही रेजिस्टेंस नजर आ रहा है. आप 19.5 पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करिए. सपोर्ट नजर आ रहा है, सॉरी 19.5 पे सपोर्ट नजर आ रहा है, आप उस पे स्टॉप लॉस ट्रेल करिए. The Angelman bought 200 shares at 3300. Hold or sell? बॉट एट 3300. होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है. स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड स्टॉक में मोमेंटम नजर आ रहा है थोड़े दिनों में, और सेक्टर वाइज भी काफी अच्छा है. चार्ट वाइज भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है. आप अराउंड 3800 4000 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कमिंग टाइम्स. Sir,
कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स देखो चार्ट देखा नहीं अब तक, बट दूसरा देख रहा हूँ, बट तब तक मैं आपको कल्याण ज्वेलर्स का बताऊंगा। कल्याण ज्वेलर्स इज पॉजिटिव बिकॉज अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है। फेस्टिव सीजन में सेल्स बढ़ता है, सेल्स बढ़ता है तो आपको पता है स्टॉक बढ़ता है। तो ये तो हो गया एक सेक्टर वाइज स्टडी, जो आपको पता है कि ये महीने में ये सेक्टर्स चलते हैं, उस हिसाब से। बाकी चार्ट वाइज भी आपको बता देते हैं। ऊपर की साइड पे टुवर्ड्स 800 और नीचे की साइड पे 650 का सपोर्ट। सर SBI card bought 70 stocks at 955. I'm holding in last 3 years, but hold or sell this stock now. अगर 3 इयर्स से होल्ड कर रहे हो, मैं कहूंगा आप शिफ्ट कर सकते हैं। सेल करना बेटर रहेगा। चार्ट वाइज भी इतना स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है। और फिलहाल के लिए देखिए, अगर 3 साल से कोई स्टॉक होल्ड कर रखा ही है तो उसमें स्विच करना बेटर है रादर देन कीप ऑन होल्डिंग, और वो मिस्टेक थिंकिंग हो जाता है। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप प्लीज स्विच करिए। Sir, Gale November future bought at 235. Target and stop loss view, please. गेल नीचे 210 तक, 215 आप पकड़िए। 210 से 15 का रेंज है सपोर्ट का, एंड रेजिस्टेंस एट 230 which is almost 1:1 again. So view on CG Power for long term. Over. लॉन्ग टर्म में अच्छा है सेटअप। टुवर्ड्स 1000 का मूव आप पकड़ सकते हो। बाय लॉन्ग टर्म आई मीन अ ईयर और सो। सो अगर 1 साल के ऊपर आप होल्ड कर रहे हैं तो 1000-1200 का आप टारगेट लगा के चल सकते हैं इसमें। नीचे की साइड पे सपोर्ट विल बी 700। Sir, can you please confirm the intraday ones, MCX? You want the range or the Range numbers or numbers. numbers? मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। यस, 6438 चल रहा था तभी, अभी तो ऊपर आ गया है। आई गेस 6438 था तभी। स्टॉप लॉस होगा मेरा अराउंड एट 6373.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? Correct. और 6438 का टारगेट मैंने दिया होगा आपको 6534.5 if I'm not wrong. Correct. So actually, we just received a query कि please confirm the numbers once there must be some issues. So फिर I was just checking in. देखिए, मैं आपको मेरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इंट्राडे कैश में मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने आपको करंट मार्केट रेट बताया है, उसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। आई यूजुअली गिव इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, हर चीज में डिफर करता है स्टॉप लॉस एंड टारगेट। बट इंट्राडे में अगर मॉर्निंग में मैं आपको 9:30 को एक स्टॉप दे रहा हूँ, 9:30 से 10 के बीच में, मेरा सिंपल है, करंट मार्केट रेट से मैं 1.5% ऊपर की साइड पे आपको टारगेट देता हूँ, लुकिंग एट द चार्ट इफ इट्स पॉसिबल। चार्ट में नजर आ रहा है कि 2-3% का गैप नजर आ रहा है, पता है 2-3% का मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है, तो मैं 1.5% का आपको टारगेट देता हूँ एंड 1% का स्टॉप लॉस देता हूँ। तो आई नो दिस इज नॉट 1:2, बट इंट्राडे में इतना बफर रखना पड़ता है। तो स्टॉप लॉस इज 1% एंड टारगेट इज 1.5%। Sir, Sensex strike for the day, if you can share. सो मैं व्यू एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहाँ पे। सेंसेक्स में विल बी ऑन द पुट साइड एंड बैंक निफ्टी में वहीं पे हम रहेंगे कॉल साइड पे। ये बहुत टाइम बाद हो रहा है जहाँ पे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक ऑपोजिट साइड में देख रहे हैं, और स्टैंड्स भी ऑपोजिट है। निफ्टी में वी आर ऑन द नेगेटिव स्टैंड्स एंड बैंक निफ्टी वी आर ऑन द पॉजिटिव स्टैंड्स। तो निफ्टी का अगर नेगेटिव बन रहा है दैट मींस सेंसेक्स का भी नेगेटिव ही बनेगा। तो सेंसेक्स के मैं आपको 2 स्ट्राइक्स बता देता हूँ व्हिच विल बी ऑन रेडार फॉर द डे।
देखिए 80,600 का पुट होगा, 145 चल रहा है। इसका मैं आपको रेंज बता देता हूँ, ऊपर की साइड पे 160 180 तक जा सकता है अभी के लिए, और बात करते करते ही आ चुका है 160 तो पुट रहेगा 8600 का। अभी ऊपर की साइड पे आप 200 पकड़िए, 200 तक का रेंज है, नीचे की साइड पे आपका 120 तक का आपका सपोर्ट है। देखिए बात करते करते ही 200 टच। हमने इनिशिएट किया था, मतलब इनिशिएट नहीं किया था, माय बैड। हमने आपको बताया था 145 पे और 200 चल रहा है। 80,600 पुट इन गुड मोमेंटम। आपको चाहिए तो इसमें पार्टिसिपेट करिए। अभी 175 चल रहा है, थोड़ा नीचे आने दीजिए, 165 160 की रेंज से उठाइए और 200 तक का टारगेट मेंटेन करिए अभी के लिए। हाई वॉलिटिलिटी की वजह से मैं आपको कम रेंज बता रहा हूँ। So I guess we'll take two more queries. We on Gala Precision. Can you spell it for me? GALA PRECESION. रिसेंटली लिस्ट हुआ है क्या? तो ये इंट्राडे और स्विंग वाइज अच्छा लग रहा है। लॉन्ग टर्म में अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज डेटा वो तरीके का अवेलेबल नहीं है और फंडामेंटली आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस स्टॉक। मुझे इतना आइडिया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। जिसके बारे में इतना आइडिया नहीं हो तो मैं इतना बोलता नहीं हूँ, बट लेवल वाइज बता दूं तो इंट्राडे में, इन नॉट इंट्राडे बट छोटा स्विंग में 960 965 और नीचे की साइड पे सपोर्ट विल बी 900। And so this will be the last query. HCL bought at 2900. Should I average it or should I hold it more? बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू एचसीएल, मैं आपको कहूंगा 80,600 का पुट है, 150 पे फिर से आया है। आप यहाँ से अगर बाय करना चाहो तो कर सकते हो। ऊपर की साइड पे 180 190 पे आप इसको बुक कर देना और नीचे की साइड पे सपोर्ट आप 120 का रखना। 30 पॉइंट नीचे 30 पॉइंट ऊपर 1:1 का ट्रेड बनेगा ऑप्शन में इसका, विच इज नॉट रिकमेंडेड, बट हाई वॉलिटिलिटी की वजह से मैं आपको कहूंगा वही सही रहेगा। 150 चल रहा है, आप 180 190 का तो आप बुक कर सकते हैं एचसीएल टाइप। Correct. अच्छा है सेटअप टुवर्ड्स 2000 मूव, और नीचे की साइड पे इट विल बी 1780 का सपोर्ट। फॉर द यूजर्स जस्ट अ स्मॉल अपडेट, जो मैंने कहा था आपको ट्रेड लेने, वो ऑलरेडी 175 आ चुका है फ्रॉम 150। So guys, that will be all for our morning session. Thanks a lot, Dev sir. If I just sum up, we have initiated one Sensex trade and one intraday MCX trade. दोनों ही trades हमारे पे profitable हैं. The targets, stop loss, everything has been shared. Please follow that till the end. And that will be all for the morning session. Don't forget to join us Sensex King for the Sensex expiry at 2:30 p.m. Thank you everyone. Thank you Dev sir. Okay.